वेलकम टू जर्मन क्लास स्पोकन जर्मन। स्पीकिंग इज नॉट डिफिकल्ट नाउ। अब हम स्पीकिंग करेंगे एक नए तरीके से, बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर वरीड स्पीकिंग कैसे करें, जर्मन तो सीख लिया, बोलना नहीं आ रहा है, सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, इसी की सीरीज शुरू करेंगे। पहले भी कुछ वीडियोस बनाई थी, हाउ टू स्पीक जर्मन प्रोफिशिएंटली, हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली। ठीक है, बिना डरे कॉन्फिडेंस के साथ स्पीकिंग करनी है। देखेंगे वीडियो में कैसे स्पीकिंग करते हैं। यहां पे देख रहे हो आप, कुछ प्रोफेशन है, जैसे हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं, लाइक आई एम टीचर, इश बिन लेरर। सिंपल फ्लुएंटली आप कैसे बोलोगे, ही इज टीचर, er ist लेरर, शी इज टीचर, sie ist Lehrerin। फीमेल के लिए आईएन आएगा। हिज बिजनेसमैन, er ist Geschäftsmann, हिज इंजीनियर, er ist Ingenieur, she is इंजीनियर, sie ist Ingenieurin। बिल्कुल फ्लुएंटली बोलना है। हिज इंजीनियर, er ist Ingenieur, er ist Arzt, ich bin Lehrer, sie ist Lehrerin, ich bin Künstler, sie ist Künstlerin, mein Freund ist Ingenieur, mein Freund ist Arzt, meine Nachbarin ist Ärztin। समझ रहे हो, इस तरह से आपको इंग्लिश बोलनी है, फ्लो में बोलनी है। सिंपल सेंटेंस। यहां पे हम वर्ब का यूज कर रहे हैं, इस्ट। ठीक है, इस्ट, शी इज, ही इज, आई एम, ich bin, ich bin Lehrer, er ist Ingenieur, sie ist Fahrerin, er ist Bankangestellte, बैंक एम्प्लॉय। सिंपल, बिल्कुल फ्लुएंटली बोलो। एक बार प्रैक्टिस करोगे जितना उतना इंप्रूवमेंट आएगा। स्पीक, वीडियो को पॉज करो और सेंटेंसेस बोलो, 3-4 सेंटेंस बोलो। ही इज स्पोर्ट्स पर्सन, ही इज डॉक्टर, ही इज सेल्समैन, ही इज बिजनेसमैन, ही इज आर्टिस्ट, शी इज आर्टिस्ट, शी इज डॉक्टर, शी इज स्पोर्ट्स पर्सन। कैसे बोलोगे? सिंपल, इसको यूज करना है, इस्ट को। इज है तो इस्ट और आई एम है तो ich bin। दोबारा प्रैक्टिस करो। ich bin Sportler, ich bin Geschäftsmann, ich bin Arzt, ich bin Makler, ich bin Verkäufer। कैसे बोलोगे? थोड़ा बड़ा सेंटेंस बोलोगे, जैसे he is my friend Rohit, he is doctor by profession। देखिए, er ist mein Freund Rohit, er ist Arzt von Beruf, Arzt von Beruf by profession, von Beruf। ये क्या है? ये सब प्रोफेशंस है। लाइक er ist Arzt von Beruf, ich bin Lehrer von Beruf, er ist Sportler von Beruf, sie ist Künstlerin von Beruf, sie ist Ingenieurin von Beruf, she is Ingenieur, he is Doctor, I am teacher, he is businessman, he is driver। बोलो, von Beruf, er ist Bankangestellte von Beruf, ich bin Lehrer von Beruf, er ist Fahrer von Beruf, das ist Herr Verma, mein Nachbar, er ist Fahrer von Beruf, this is Mr. Verma, my neighbor, he is driver by profession। कैसे बोलोगे? थोड़ा सेंटेंस को स्ट्रक्चर करो, माइंड में बोलो, एक सेंटेंस फ्रेम करो पहले। ही इज माई नेबर, ही इज डॉक्टर, ये मेरा पड़ोसी है, ये डॉक्टर है। ही इज माई नेबर, ही इज डॉक्टर, er ist mein Nachbar, er ist Arzt von Beruf, er ist Arzt von Beruf। ये प्रोफेशन है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इनको बोलना है। बार बार बोलो, प्रैक्टिस करोगे तो ही सीखोगे। ठीक है, जब इतना बोल लोगे फिर हम थोड़ा सा एक बड़ा सेंटेंस बनाएंगे, इनको हम कुछ एडजेक्टिव बोलेंगे। ये तो हमने सीख लिया था, er ist mein Freund, er ist mein Nachbar, er ist mein Freund, sie ist meine Freundin, है ना। इनको आप ये भी बोल सकते हो, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, फ्रेंड। ठीक है, और फ्रेंडिन, ये आपके नेबर भी हो सकते हैं, नाकबार और नाकबारिन। ठीक है, ये आपके कलीग भी हो सकते हैं, कोलीग। ठीक है, ठीक है, ये आपके नेबर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके कलीग हो सकते हैं, कोलीग। बोलो, सेंटेंस बनाओ। Das ist mein Nachbar, er ist Herr Verma, er ist Ingenieur von Beruf, this is my neighbor, this is Mr. Verma, he is engineer by profession। पहले बोलो, क्या है वो? आपका फ्रेंड है, नेबर है, उसका नाम क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है। एक और सेंटेंस बोलोगे, बोलिए। Das ist Herr Gupta, er ist mein Nachbar, er ist Ingenieur von Beruf। ठीक है, he is engineer by profession, he is my neighbor, he is Mr. Gupta, she is Miss Verma, sie ist Frau Verma, she is engineer, sie ist Ingenieurin von Beruf, she is my neighbor, sie ist meine Nachbarin, sie ist meine Nachbarin। क्लियर हुआ? समझ आया? ये है प्रोफेशंस। अलग अलग प्रोफेशंस है, पढ़ा है ना आपने, बेसिक प्रोफेशन कैसे बोलते हैं। Was sind Sie von Beruf? What are you by profession? आपका प्रोफेशन क्या है ना। क्वेश्चन आपको पता है
क्या होता है क्वेश्चन? Was sind Sie von Beruf? ठीक है, Was sind Sie von Beruf? What are you by profession? आपका प्रोफेशन क्या है? Was sind Sie by profession? और Where sind Sie? Who are you? Where sind Sie? Who are you? Who are you? Who are you? और Who is this? Who is this? Who is this? Where is das? Where is das? ठीक है, जैसे मैंने बोला Where is das? Das ist Herr Verma. Was sind Sie von Beruf? Er ist और ich bin Lehrer. Er ist Ingenieur von Beruf. Was sind Sie? आपका प्रोफेशन क्या है? यदि आपसे पूछ रहे हैं आपका प्रोफेशन क्या है, मैंने पूछा आपका प्रोफेशन क्या है? Was sind Sie von Beruf? आप कौन हो? Wer sind Sie? वह कौन है? Where is das? Right? Where is das? Das ist mein Freund. Das ist mein Nachbar. Where is das? यहाँ पे क्या हो सकता है? This is my friend. ठीक है, और this is my Nachbar. या IN. फीमेल है तो IN लगाओगी. Where is das? Who is this? Das ist mein Freund. या das ist meine Freundin. Right? Was ist sie von Beruf? What she is? Was ist er or sie von Beruf? उसका प्रोफेशन क्या है? उसका प्रोफेशन क्या है? He or she. Was ist er von Beruf? दोबारा से Das ist mein Freund Rohit. Er ist Ingenieur von Beruf. Right? Das ist meine Freundin Ria. Sie ist Ärztin von Beruf. Correct? This is my friend. This is my neighbor. He is doctor, engineer by profession. फ्लो में बोलोगे समझ आएगा. समझ आ रहा है? फ्लो मेंटेन करना है, बोलोगे समझ आएगा. बोलोगे तो बिल्कुल समझ आएगा. सिंपल सेंटेंसेस. कुछ एडजेक्टिव्स लिखेंगे. एडजेक्टिव्स जैसे लिखेंगे स्ट्रेंथ, नेट, नाइस, शॉन, ब्यूटीफुल, या फ्लाइसिश हार्ड वर्किंग, एक्टिव, वेरी एक्टिव, फाउल, लेजी, शार्मांट, हैंडसम. क्या होता है? शार्मांट, हैंडसम. गर्ल्स को बोलते हैं ब्यूटीफुल, शॉन. बॉय होता है शार्मांट. शार्मांट. हिल्सबेराइट, हेल्पफुल. ही इज वेरी हेल्पफुल. सुपरलेसिश, रिलायबल. यहां पे हम यूज करेंगे सब्जेक्ट पर्सन के लिए. Das ist mein Freund, er ist nett, he is nice. Das ist meine Nachbarin, sie ist aktiv. Das ist mein Freund Rohit, er ist hilfsbereit. This is my friend Rohit, he is helpful, hilfsbereit. सेंटेंस बोलो, इस तरह से बोलो, सेंटेंस बनाओगे. ये एडजेक्टिव्स हैं. ठीक है, सिंपल यहाँ पे वर्ब इस्ट के साथ हमने यूज किया. इस्ट, जी इस्ट, एर इस्ट, इश बिन. अगर अपने लिए बोलोगे तो इश बिन Lehrer. Ich bin aktiv. Er ist Arzt. Er ist fleißig. Sie ist Ärztin. Sie ist aktiv. Mein Nachbar ist faul. Ist lazy. सेंटेंस बनाओगे, किसी भी तरह का सेंटेंस बनाओगे, इनको यूज करोगे. Mein Freund Rohit ist zuverlässig. Mein Bruder ist zuverlässig. Ja? Mein Lehrer ist charmant, handsome. Mein Bruder ist charmant, हैंडसम. इस तरह से सेंटेंस बनाओगे. एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं इश्क के साथ. ही इज, शी इज, आई एम. कैसी लगी क्लास? कमेंट करके एक सेंटेंस पूरे बनाओगे जो भी हमने सीखा है, और कमेंट में लिखो कैसी लगी क्लास. 1 सेकंड लगेगा, लाइक करोगे और चैनल सब्सक्राइब करोगे. थैंक यू सो मच. आउ विडरसिंग.